हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों अभी एक ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर कॉन्फेडरेशन का जो सर्कुलर है दैट इज ऑन अक्टूबर 18 2022 उसका जो सर्कुलर है वो दोस्तों आउट हो चुका है फॉर सर्कुलेशन अमंग मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल, स्टेट सेक्रेटरीज, स्पेशल इन्विटीज एडवाइजर्स, एफिलिएट्स एंड मेंबर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीबीपीआरओ। सो डियर कॉमरेड्स, सब्जेक्ट इसमें दोस्तों आपको पता ही है क्या है। माइनर्स ऑफ मीटिंग हेल्ड बिटवीन ऑफिशियल्स ऑफ आईबीए एंड लीडर्स ऑफ एआईबी पार्क एट द ऑफिस ऑफ द आईबीए on 11th October 2022 on the issues pertaining to interest of retirees and pensioners of banking industry. सो दोस्तों जी सर्कुलर बहुत लंबा है। सो वी अगेन श्योर दैट आवर relentless efforts will continue to settle all the issues. सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सर्कुलर एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा लंबा है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबीए को ये रेफर करा गया है। श्री ए के गोयल, चेयरमैन आईबीए, मीटिंग बिटवीन आईबी ऑफिशियल्स एंड लीडर्स ऑफ एआईबी पार्क ऑन 11th October 2022 at IB office on issues pertaining to interest of bank pensioners and retirees. So at the outset, we convey our sincerest thanks and gratitude for giving us the opportunity of presenting our case and of being heard. We also record our admiration and appreciation for the concern and care with which the officials carried on the dialogue for more than 3 hours. So it was an interactive section which we believe would prove fruitful results. So the proceedings of the meetings are briefly reported here under for your record and reference. So ये मीटिंग में हुआ क्या दोस्तों वो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं। IBA was presented by श्री गोपाल मुरली भगत, डेप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्री ब्राजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर, एंड AIB पाक वाज रिप्रेजेंटेड बाय श्री के आचार्य, प्रेसिडेंट हैं जो कि AIB पाक के एंड ज्वाइंट कन्वीनर CBPRO के, एंड सुप्रीता सरकार। सो डिस्कशन वेंट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज हेयर अंडर। एजेंडा 1 जो रहा वो रहा पेंशन अपडेशन का। The details view of our organization were placed in the following manner. On pension updation, we discussed at length the provision of Regulation 35(1). आपको जैसा पता है रेगुलेशन 35(1) में ही हमारी पेंशन अपडेशन का मैटर प्रॉपरली मेंशन्ड है दोस्तों। एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट अभी जो ईयर 2003 में हुई थी टू मेक द प्रोविजन एंड ओपन एंडेड वन विद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कोर्ट क्या है इसमें, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयरेबल एप्लीकेबल शुड बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन द अपेंडिक्स 1। जैसा कि आपको पता है रेगुलेशन 35(1) में क्लियरली मेंशन्ड है भी बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन उसको दोस्तों हमने अपडेट करना है, शुड बी अपडेटेड नहीं एज पर द फॉर्मूला जो हमें अपेंडिक्स 1 में दोस्तों गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नहीं आप यहाँ पे देखें अगर वी आल्सो रेफर टू रेगुलेशन 5, 7 एंड 11 विच डील विद द फॉर्मुलेशन एंड एडिकेसी ऑफ कॉर्पस statutory responsibility of the banks, regulation 35(1) to update pension with each salary revision of serving employees and officers. So BEPR 1995 have been framed by the boards of bank with the previous sanction of Government of India and in consultation with the RBI on patterns of central government and RBI pension schemes. So we also share the previous correspondence of IBI, then General Secretary of AIBOC, Comrade RN। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी सेक्शन 35(1) में जो क्लियरली मेंशन्ड है भी हमारी जो पेंशन है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयरेबल एप्लीकेबल शुड बी अपडेटेड, जो अभी फॉर्मूला होगा गिवन इन द अपेंडिक्स 1। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आल्सो कैटेगराइज एंड असर्टेड दैट what is required to be done by bank is to be implement regulation 35(1) which was amended in 2003 making updation of pension to all pensioners covered under the defined benefit schemes without further delay and to implement the same as per the RBI formula to all pensioners up to 11th by part settlement respecting the statutory obligation। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं व्यूज क्या रहे आईबीए के। The officials of IBA informed us that they were aware of the developments and familiar with the documents relied upon by us. So it was further informed that the issue of अपडेशन ऑफ पेंशन इज ऑन द IBA एजेंडा, वो IBA के एजेंडा के ऊपर दोस्तों है। एजेंडा नंबर 2 जो रहा वो 100% DA न्यूट्रलाइजेशन रहा।
टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज। जैसा कि आपको पता है प्री नवंबर 2002 रिटायरीज की जो पेंशन है दोस्तों बहुत कम है। सो ऑन 100% DA न्यूट्रलाइजेशन टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज we submit the copy of relevant extracts of the bipart settlement to make home the point that there was no discrimination in between the pre and post November 2002 retirees as regard date of implementation. So any subsequent advice to banks by IBA not being substantial by the settlement has a little value in the eye of law, not be standing home level Supreme Court judgment. So we explain the rationale or otherwise of the judgment and the need to objectively read the judgment दोस्तों. So we further argued that the recommendation sent by IBA to the government has not been turned on, but certain clarifications has been sought for IBA should reopen the chapter with clarification and recommendation to the union government. So we also brought to the notice of IBA that because of enormous and inhuman delay, nearly 50% of the original beneficiaries have left the world and it is high time to act upon. तो इसमें जो व्यूज रहे IBA के, द ऑफिशियल ऑब्जर्व दैट सर्टेन क्लैरिफिकेशन हैज बीन सॉट फॉर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेम वाज बीइंग प्रोवाइडेड. नेक्स्ट दोस्तों जो एजेंडा रहा ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायरीज, इसमें क्या रहे व्यूज ऑफ IBA. द ऑफिशियल्स ऑब्जर्व दैट they were also seized with the problem following the guidelines of government of India and IBA. The tendering process was conducted and lowest bidder was selected. So different serving organizations have also asked how different state-owned companies were offering lower rates. So the said companies were also contacted by IBA and they confirmed that any reduction in premium was possible only when some compromise on the quality of insurance coverage was done. तो ये दोस्तों व्यूज रहे IBA के. As the views of two-sided could not reach any unanimity, so we demand full reimbursement since the letter of Government of India to IBA in the year 2012 did not spell out anything about sharing of premium by the retirees. Next जो एजेंडा रहा स्पेशल अलाउंस टू बी रेकॉर्ड फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, इसमें क्या व्यूज रहे IBA के. दिस हैज बीन एग्रीड अपॉन by both the parties in the bipart settlement joint note and this is not possible for IBA to change anything unilaterally at this stage. The leadership of AIB contended that there had been judgment of the court or similar situation and it was high time for IBA to have a relook into the issue. Next जो रहा improvement of ex gratia to pre 86 retirees, इसमें दोस्तों क्या views रहे IBA के. The officials of IBA exhibited their sincere concern to make an honorable upward hike of ex gratia payment to the pre-1986 retirees and spouses. तो दोस्तों अगर आप देखिए नेक्स्ट एजेंडा वन मोर ऑप्शन टू पेंशन फॉर ऑल एलिजिबल रिटायरीज, इसमें द ऑफिशियल्स ऑफ IBA exhibit their sincere concern to us and assured an early and favorable resolution of the issue. नेक्स्ट एजेंडा नंबर 6 जो दोस्तों रहा वन मोर ऑप्शन टू पेंशन फॉर एलिजिबल रिटायरीज. The officials informed that IBA has taken a view in this regard that no option would be allowed to such officials since they tendered resignation with full knowledge of consequences. So if any favorable judgment is received by any such person, IBA will be acting upon it. So दोस्तों आप सर्कुलर प्रॉपरली यहाँ पे रीड कर सकते हैं. अगर आपको कोई इसकी फुल कॉपी चाहिए हो मैं वो दोस्तों आपके साथ शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट जो पॉइंट रहा next is the views of IBA on the above issues were placed as under. So our consultative status of bank pensioners and retirees organization, we that it was at the instance of the government. IBA asked all member banks to form a grievance redressal machinery at corporate level of each bank, but when it comes to IBA itself some peculiar logic was advocated saying that it did not have the mandate from banks to negotiate with retirees organizations. So this is a analogous situation by itself. So we demand that the organized exercise at individual bank corporate level should be done at IBA level also with the PEX level retirees organization, and negotiation status to retirees organization should be given who form by themselves are separate and large homogeneous group. तो views of IBA क्या रहे दोस्तों इसमें. The officials of IBA contended that they formally discussed with the constituents of UFBU since the member banks have
gave authority to IBA in this regard, but there was no such authority in respect of pensioners and retirees organization. So AIB Park contended that the member banks do what they are asked to do, as IBA has been responsive enough to call us for the discussion this time. So the same process should be followed at periodic intervals for all affiliate based organizations of pension. So दोस्तों, sir, this is well within your knowledge that we had the opportunity of meeting the Union Finance Minister at our office on 4th October and discussed all the issues. We had a very proactive response from Finance Minister. The meeting with IBA in quick succession is a testimony of our assurance and concern. So दोस्तों, आप देख सकते हैं, they cannot wait indefinitely for resolution of their rightful claim. So we also fervently hope that IBA will take upon the responsibility of translating the wishes of the Honorable Finance Minister in extending the comfort of treating its former employees as members of same family and resolve the long pending issues. जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली दोस्तों रिजॉल्व करेंगे. तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो सर्कुलर है जो कि व्यूज ऑफ IB हैं वो KB आचार्य जी एंड सुप्रीता सरकार जी ने साइन करे हैं दोस्तों. सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट एज ऑन टुडे. तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर देना.